भाई लोग वेलकम बैक गेम ऑफिन चैनल है प्रेस स्टार्ट टू प्ले पॉडकास्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब इंडियाज मोस्ट प्रीमियर पॉडकास्ट। तो यार तुम लोगों ने कमेंट किया हमने पढ़ लिया यहाँ भी तो कुछ कमेंट्स के बारे में थॉट्स थे। राइजन कहता है व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट रेडफॉल एंड देन उसके आगे भी हम गम बांट रहे थे क्या चल रहा है एक्सबॉक्स के साथ एंड ऑल दैट। तो राइजन कहता है एवरीबॉडी फॉरगॉट अबाउट स्टॉकर 2 मैन, पता नहीं इस साल आएगा कि नहीं, बट मुझे लग रहा है इट डिडंट कम अप इन दैट डिस्कशन क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट से मतलब क्या ही रिलेशन है, मतलब 3 महीने का या व्हाटएवर एक्सक्लूसिविटी, लाइक इट्स नॉट अ माइक्रोसॉफ्ट गेम ना, तो इसीलिए लाइक इट डिडंट कम अप। नेक्स्ट तुर्बिया का कमेंट है दिस और एक्साइटमेंट बिल्ड कर दिया स्टारफील्ड के बारे में। तुर्बिया कहता है आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर स्टारफील्ड, it is the most hype game for me since Elden Ring. I'm looking forward to it not only because it is a Bethesda RPG but also because I read in Todd's interview that he incorporated a lot of scientific accuracy and realism into the game. As a scientist, science enthusiast and academia, I hope to see the mind-blowing phenomena like in Interstellar. For example, imagine visiting a planet that is near a black hole and experiencing the effects of time dilation, where the game's internal time changes accordingly. ये मतलब अगर टॉड ने ऐसा बोला है तो ऑफ कोर्स टेल मी स्वीट लिटिल लाइस, बट टॉड मैकेनिक्स के बारे में बोला है, टॉड ये सब नहीं बोला है, मैं सिर्फ ये बात बता। अच्छा नहीं बोला है इससे उसने, मतलब ये ब्लैक होल नहीं बोला है, ब्लैक होल नहीं लाइक जैसे वो कह रहा है एक्यूरेट साइंस एंड ऑल वगैरह ऐसे वो वैसा बोला है, पर I suppose it should be taken with a grain of salt regarding the sense is that they always incorporate some new mechanics into their games into their games like this, but it's always done in the onus of fun. Like they would not do something which will create a not fun experience for you while playing the game. I think उसका example भी शायद पुराने के इंटरव्यू में है regarding Starfield, regarding okay, I'll tell you regarding fuel. Okay, that fuel your fuel tank going down to 0 was something that they played around with during prototyping the game, and they thought it was not fun because you might be in between a mission and suddenly your fuel will be over and you'll get stranded. So and they had to think of different mechanics on how you can do that. So all those things which can actually be incorporated by mods later on, right? Yeah. Survival aspects जिसको हम लोग कहते हैं, हाँ, जैसे Skyrim में भी survival aspects वाला बाद में लोग का they added a official update regarding that and people can do that. But I don't think they will incorporate any changes which actually tweaks the fun out of the game. They would not do that. So regarding time dilation or something like that, I don't think we are going to see something like that in the game. But tweaks with gravity, that might be something that we're going to see. That's what I was thinking. कि ना जो तुर्बियान जो कह रहा है, all of that sounds very interesting. But more realistically, Todd जो कह रहा है कि science होगा, मुझे लग रहा है like what you said is very true. Fun को हटा नहीं देंगे from the equation. But if they do, it will be something like ना जैसे if it's a higher gravity वहाँ पे तो ना you'll need like a higher carry capacity. Right. And it will be like a easily available perk or something that you can add या कुछ ना, तो उस टाइम पे थोड़ा boost हो गया ऐसा कुछ, like it'll be a easily craftable potion. वो भी ज्यादा लग रहा है वैसे तो for Bethesda, but मतलब ऐसा कुछ होगा लग रहा है मुझे। I think they're going to work a lot with suits this time around. Oh yeah, different types of suits and different types of things that you might need in certain extreme environments. Yeah. So just say I think you'll start off like as a miner. That's how what the usual rumors are, that you'll start off in a mining colony or as a miner or something like that, and then you'll go on for that. That's where the 2 or 3 opening vistas come through, and I think you'll start off with like a mining like a suit, and then maybe progress further and further into like different other kinds of suits which are possible, like ज़्यादा gravity या low gravity या कुछ heat के लिए या cold के लिए. So I think those will be interesting to see. Time dilation वाला idea is cool. You might see modders do it, but then Bethesda में time in their games is non-existent almost. Like we have the change of like months and वो सब, but time as a finite concept does not exist in these games. Like Persona में time is limited to you, what you can do. So over there, मान ले if you were somehow in space and you lost that time, that was a big hit. But I don't think in Starfield it's going to matter. Like if you've lost 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, your main quest, side quest, सब तो चल ही रहा होगा वैसे ही. So nothing that will matter. But interesting concept to have, like ideas that people are already having
ऑफ क्या मॉड कर सकते हैं गेम में देखने को मिल रहा है अभी सही. तो मॉडर्स गेट टू इट अभी सही ताकि मानस कैन प्ले इट ऑन लॉन्च. वही तो ना. टू बी ऑनेस्ट लाइक स्टारफील्ड को लेके तो मेरा एक्साइटमेंट इज नॉट लाइक जस्ट लॉन्च टाइम. मतलब लॉन्च टाइम में ठीक है, आई विल प्ले द गेम दैट डे. लॉन्च टाइम पे तो आई एम ओके विद प्लेइंग ऑन एन एक्सबॉक्स सीरीज एक्स. इनफैक्ट मैं कंसोल पे प्रेफर करूंगा खेलना, जस्ट लाइक द प्योर जो वेचसा ने बनाया. बट व्हाट आई एम रियली वेटिंग फॉर इज लाइक 5 years डाउन द लाइन मॉड्स आ गए, fully overhaul mods and all. Oh, मॉड पैक crazy. डाला. Yeah, the crazy stuff. इंटरस्टेलर पूरा मूवी खेल लिया Oh, स्टारफील्ड में. होगा ये. Wait for it. यही होगा. Starfield के अंदर there will be game of the years. ओ भाई. You'll see. तो anyways, रंगा का comment है. This is regarding what's the game? Jedi Survivor. I just finished the game and love it. For me, the best part is Pylon Saloon. The people we recruit there, playing music, talking to everyone. Turgle. Also, another great point is all the text logs that you find. They're kept to just 2 sentences, so you can easily understand and get back to the game instead of needing to spend so much time reading. Yeah, even I finished the game. मैं कुछ spoil नहीं करूँगा, but I think it in many ways मेरा ही concern था it will not be able to land the ending. मुझे ऐसा लगता है कि they like उन्होंने what they were going for, I don't think it's like perfectly landing the ending, but ना they have like it's not a big spoiler या कुछ like it's just कि ना और content है game में, like there is a lot to end का they spend a lot of time with that ending. मतलब बहुत time, like it's like 3-4 hours आराम से है like with that ending, and it's not exactly the same as Red Dead Redemption 2 में जैसे था, but उस वाला satisfaction मिलता है because of the time you get there. वहाँ पे ना तो it's like very satisfying, very conclusive, and also one of the best things I could not believe कि ना इतना मजा आ रहा है गेम खत्म होने के बाद खेलने में ना, after credits खेलने में it's so much fun because like एकदम towards the end you unlock some abilities and all that open a lot more of the world to you. So now like wherever you're going कुछ ऐसा चीज है जो पहले that you even forgot about क्योंकि इतना टाइम हो गया है उसका एक्सेस नहीं मिला. तो it's like just so much fun to just discover stuff जिसके एंड पे there's like a cosmetic reward. So you're not like really doing it for the reward, the funness and like the exploration, and they've kind of still kept it pretty high quality even at the end जहाँ पे like many people may not even be playing. So yeah, I think that is like the best thing about this game. Now the more you play it, like it starts off at a I think 7 minimum, मतलब 6-7 पे स्टार्ट करेगा वो, एंड इट कीप्स गोइंग अप एंड अप. मतलब काफी गेम्स होते हैं ना जो उनका जो शुरुआत है वो बेस्ट होता है, लाइक वहां से इट्स लाइक मोस्टली इधर द सेम और डाउन. लाइक ये तो ऊपर जाते जा रहा है, इट्स लाइक गेटिंग बेटर लाइक टू सॉलिड 9-8-9 तक. तो इट्स परफॉर्मेंस इज लाइक फक ऑल मैन, इट्स सो बैड. खत्म करके तो आई वाज इवन मोर पिस्ड ऑफ जब मैं पैच नोट्स पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा है कि लुक आउट फॉर मोर अपडेट्स थ्रू द कमिंग वीक्स. मैं कहा यार ये कब गेम इज आउट. ये क्या मतलब व्हाट इज की थ्रू वीक्स, मतलब तुम्हें पता है कि इफ यू नो कि द नेक्स्ट पैच इज गोइंग टू टेक वीक्स, तो यू नो कि द गेम वाजंट रेडी वीक्स अगो. राइट. मतलब मुंह से निकल गया है ड्यूड. सो फकिंग अनोइंग मैन. वो देख के मतलब इट वाज सो हॉरिबल उसका परफॉर्मेंस यार. मैं बीच में बताया तो मैं ना 30 पे स्विच किया एंड इट फेल्ट लाइक द सेम आई वाज फ्रेम रेट आई वाज गेटिंग ऑन परफॉर्मेंस मोड. मतलब मैं परफॉर्मेंस पे मतलब मैं 30 पे खेल रहा था. मतलब इट्स सो बैड. मतलब सम ऑफ दैट इज वो भी इतना सुंदर गेम यार. मतलब इट्स सो प्रिटी बट इट्स नॉट कि वो PS5 पे नहीं. लाइक आई हैव सीन प्रिटियर गेम्स ऑन द PS5. मतलब एज इन ग्राफिकल डेंसिटी उसमें ज्यादा है, बट दिस गेम हैज इनक्रेडिबल आर्ट जो उन गेम्स में नहीं है. लाइक होराइजन फॉरबिडन वेस्ट में ऐसा आर्ट डिजाइन नहीं है ना. दिस इज रियली हाई क्वालिटी एंड विजुअल ऐसे इश्यूज, परफॉर्मेंस इश्यूज. टीयरिंग तो हमेशा इट्स नॉट अ बग, इट्स अ फीचर. वो टीयरिंग मतलब हमेशा है यार. यू कैन नेवर अनसी. मतलब कभी नहीं है कि तो टीयरिंग नहीं है. मतलब क्या मतलब इट्स सच अ ग्रेट गेम. लाइक ना एवरीबॉडी शुड प्ले दिस. इट शुड बी लाइक ना इस गेम के बारे में जैसे रेड डेड की तारीफें होती है, गॉड ऑफ वॉर की तारीफ वैसी होना चाहिए था यार. लाइक व्हाई इज दिस इवन अ पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन? इट्स सो डिसअपॉइंटिंग. इसका लाइक आई वाज प्लेइंग ऑन द PS5. आई रीच्ड वो कोबो वाला प्लेनेट वेयर यू गेट टू ये पाइलून सलून, and then you're asked to go to this array inside a forest, and wahin pe like I could tell like performance was dropping PS5 pe, and frame rate. And around that time only I lucked out and I ended up upgrading my PC to a 3080 Ti and Ryzen 5800 X3D, so very top of the line parts. So I was like tempted, man thoda sa aur PS5 पे खेला थोड़ा और PS5 पे खेला, but then I was like PC पे देखते हैं कैसा है. So I bought the game on PC, ठीक है, just to see how it ran, and my god, like okay,
I'm in the 1% of people जिनके लिए ये गेम ढंग से चल रहा है. But man, like the difference is night and day between PS5 and ये. Simply because PS5 वाला कहाँ से upscale कर रहा है, वो like 720p से 1440p upscale कर रहा है. Meanwhile यहाँ पे I'm able to like use FSR quality on 4K and play on high settings at 60 FPS. And the game is so, मतलब जो मैंने said is exactly correct. It's so pretty. क्या art direction है इसका, like it blows my mind. Like playing it, मैं आधे टाइम बस बैठ के देख रहा होता हूँ, and then I'm annoyed with the game because patches also break the game. Like अभी in the PC there is a bug where if you rotate the camera कहीं पे भी ना, screen tearing नहीं आ रहा, but camera के edges पे like you can see the world load away. तो वहाँ पे ना it will be white edges पे when you turn the camera, या वहाँ पे कुछ होगा ही नहीं. It will just be like skybox. इतना like you have such a beautiful scene and बाकी it's like साइड में इतना अगले लगने like अरे यार this is pulling me out of the game that I'm so invested in, and gameplay like story wise so I am in as a Star Wars fan. तो there is मैं तो fan भी नहीं हूँ, and मुझे believe I'm so happy. It's like one of the recent Star Wars movies जो भी, this is one of the best stories. Like I have been telling my friend like who he doesn't have a PC that's good enough to play the game, and I'm just telling him like this is, and we're both huge Star Wars fans, like ये अभी तक का one of the best Star Wars है. Like this is probably at the level of maybe even higher for me than Andor and Mandalorian season 1, which are like some of the most recent Disney वाले top Star Wars things. ये game like goes higher because इसमें ना they have a little bit freedom, and हर एक चीज में पता लग रहा है कि क्या डिटेल क्या है. तुम लाइट सेवर कस्टमाइज कर रहे हो, तुम्हें उसमें डिटेल दिख रहा है. There is a scene that I won't spoil at the start of the game, around Kobo only when you get there, where you can see a certain process happening on a lightsaber, which is something that you only know can happen if you've read like the books and stuff to learn ki, oh, this is how they, you know, change colors of lightsaber, something like that, right? And you see it happening in a story cutscene, and it's like for me who knows what was happening, I was like, before Cal even knew what was happening, I was like, oh shit was happening in my head because I knew what was coming. And then like seeing like all these little things, like यहाँ पे talking about Bacta tanks, talking about these planets, ये वाला Corellian system, this that, like for me who is knee deep into this world, I know exactly what they're talking about, and वो किस event की बात कर रहे हैं, वो किस planet की बात कर रहे हैं, वो कौन सी species की बात कर रहे हैं. You can tell कि इतना ज़्यादा detail and वो गया है ना हर एक छोटी चीज में, that it like every time I'm playing it, मैं मैसेज करता हूँ ग्रुप पे to these guys who are ahead of me and played it कि यार oh man this was awesome, like oh this game is made by people who love Star Wars, or you know some they've added things that like is like really niche Star Wars nerd shit that you would not expect, and it's in the game, and I'm like this is why I'm loving it so much. And the reason कि I'm not playing it more is because of patches. That's the only reason I'm not playing it 24/7. By the year, when the year turns around, by the time when we actually get to talk about GOTY, I think this will be a really good experience to play. I think there'll be multiple patches in Mon, but the state at which it has been launched right now, it does disservice to what the game actually is. And I think people all around, fans or not fans of Star Wars, can say the same. I just hope that this does get its own fair share in the Game of the Year considerations. Yeah. I love you, Star Wars Jedi Survivor. Great game, man. Chalo, Beyond Zetabyte कहता है, this is from the video where we talked about review process and all that. तो हमारा ही देखो सिर्फ. हाँ. हमारा ही कहता कि वो कहता कि I stopped watching review videos a long time ago. I only watched one review which video game Dunkey का Dunk View for fun. Now I consider installing or buying the game if I like the gameplay trailer and if it is my kind of game. I love lots of games which people give bad reviews. Example Anthem, Days Gone, etc. Oh भाई Anthem. वैसे it had some things you could like about it. But anyways, जो इसका interesting part था, I also love videos of this guy Namokar Gaming World. I found him on Manas's roasting video and I found out he has the same taste in gaming like me. So if Chacha likes the game, then I feel like I'll also play it
तो ये मुझे I think this is like a very valid way कि ना हम this is usually how you find like a reviewer who is for you instead of like just a GameSpot or IGN and then complaining कि इन्होंने इसको ये दिया इसको दिया. It's like different people with different taste है. तो ये even Namokar is like I think fair enough reference ना किसी को, that's why people watch him also. Yeah, this is like the right way. काफी बारी जाकर मुझे if I want to like discover जैसे मुझे कुछ strategy type चाहिए या city building, तो I know like specific channels जहाँ पे they cover these games ना, तो मैं उनका जाके देखता हूँ कि अच्छा इस गेम के बारे में what does this guy want to say because ये इस टाइप की गेम बहुत कवर करता है. If like a new Tarkov or something उस टाइप का कुछ गेम है, I would like to see General Sam जो बंदा है वो because he plays a lot of Tarkov, तो ना मतलब वैसे you can find like different reviewers for yourself. How do you guys do it? Or do you guys have anything to say? Like, are you also fans of Namokar? I do watch Namokar videos sometimes. They're a lot of fun, and this is a lot of entertainment in that. And but the one of the channels that I want to talk about is Splattercat. I love his channel. I watch a lot of Splattercat videos. He goes in depth into most of the games that he plays, and I get to know about new games and how they play and connections to that from his videos. So he's a recent YouTuber that I've discovered. But apart from that, yeah, there are certain other very niche stuff. I know, okay, strategy games ke baare mein to I need to go here and stuff like that. And one of the reasons why I didn't buy the remake of Pharaoh is because I saw in one of those videos ke thoda ruk jao and stuff like that. It needs it's not good yet. Damn it. Yeah. Anyway, so Sujir, you mentioned Splattercat gaming. I think you make an excellent point. I think जिसमें हम एक अलग tangent पे जा सकते हैं कि Splattercat gaming जैसे channels पे if you go ना, those are channels where you can discover games also. You're not going there to see कि अच्छा ये game के बारे में मुझे पता है उसका review क्या है. It's like discovery, and I think this also ties into IGN ने recently एक tweet डाला था. Oh my god. Video पे लाऊं, I think. Yeah, a video. It was a video where, and I think it's like a funny enough video. Kind of self-aware also, कि ना like they're talking about कि ना उनके इतने सारे games को 7 out of 10 क्यों मिलता है, and I think it's like if you understand games and या ये situation कितने सारे games आते हैं ना कि you'll understand कि हाँ यही है reason. तो basically they explain saying कि ना like there are so many games that are coming out and काफी सारे games that they choose to review are games जो already popular होते हैं. Like or at least I mean that's how they also get to know about it कि ना अच्छा ये गेम पॉपुलर है या हमें भी इस गेम में इंटरेस्ट है, जनता को भी इंटरेस्ट है, like they're like everybody else. So they like I think 7 out of 10 represents the mainstream कि ना उनका taste like yeah it is a 7 out of 10 जो, and a lot of these 7 out of 10 games are like okay they're not bad. वैसे ना उन्होंने बोला इसीलिए इतने सारे 7 out of 10 games देते हैं, and they also say another thing कि like you won't go and review like a no name game on Steam because you think like वो बहुत fraud, क्योंकि when you're an IGN you're also looking for like you're running an entertainment channel, एक business चला रहे हो तुम कोई charity या spotlight service लेके ना you like going around highlight, of course you'll highlight gems when you can, but I think IGN ने जब ये बोला I think it is the truth जो है कि हाँ ऐसा है like कि ना why will they cover like वो interest नहीं आता लोगों में है ना like but if they review like a big name game तो उसमें millions of views आते हैं. They need, in the end they need numbers man, something like even which like game feel and वही लोगों को देखना, and the reality is कि that is also what people want to watch क्योंकि तभी तो views आ रहे हैं उसपे, तभी तो even if they do like a maybe a small indie dev का interview or a small indie game का showcase, जब IGN जब live stream करेगा Xbox and IGN जब live stream करेगा like a indie वाला वो Tribeca का live stream करेगा, which one has more views ना, interest किसमें ज्यादा है, of course like I mean it's obvious like है ना, तो मुझे लगता है IGN went and made the mistake of like being a little bit more honest. वो ये नहीं कहते कि वो वीडियो पे नहीं बोलना चाहिए था. हाँ मतलब they went and also said कि ना like जिन गेम के बारे में हमें पता नहीं चलता they probably not good games, but I think they said like they probably not games जो एक mainstream gamer के वो सुनना चाहेगा. कि ना like I mean mainstream gamer would like to hear more about God of War maybe. But not so much about like a Pentiment, उतना नहीं सुनना चाहेगा है ना, तो that is what they were saying, but it came out as कि नहीं like Pentiment is a worse game than a God of War वाले में, तो I thought that was hilarious. And I think they made a mistake of taking down that video. It made them seem guilty. आज भी लोग बोले देखो वीडियो भी निकाल दिए, मतलब वो लोग guilty. So I think that was like a thing, but I do understand the sentiment regarding it. People like don't realize every day कितने games release होते हैं.
You Like- can't imagine, guys. like- Like seriously, guys, you can't imagine. Like Forget number of normal games that get released IO every day. games or I don't think Steam even we can imagine. Yeah, It's like too much. I'm not talking about bad like early access first project games. I'm talking about proper indie games. ठीक है, जो जिस पे टाइम पैसा गया डेवलपमेंट में, जिसका पब्लिशर गेम पब्लिश कर रहा है, ऑलमोस्ट हफ्ते में इतने सारे गेम्स रिलीज होते हैं ना दैट यू नॉट इवन नो अबाउट और टॉक्ड अबाउट. एंड अब हाउ विल यू कवर लाइक एक हफ्ते में 7 दिन है, अगर 8 गेम रिलीज हुए हैं हफ्ते में, हाउ आर यू गोइंग टू कवर इट? वेयर डू यू फाइंड द टाइम टू कवर 8 गेम्स? इवन इफ इट्स योर जॉब, तुम मान लो तुम 8 घंटे डाल रहे हो रोज, हाउ आर यू गोइंग टू फिनिश 8 गेम्स इन द स्पैन ऑफ लाइक 8 into 7? हाउ मेनी hours इज दैट? खुद सोच, लाइक इट्स इम्पॉसिबल टू डू दैट. सो लाइक the way they said it was probably not the best way, but what they're saying is the truth, especially aajkal. Like 12 years ago things might be different, jab games were much, releases were more of a big thing. आजकल के ज़माने में तो हर दूसरे तीसरे दिन there is a decent game coming out, especially like specific niche वाले games तो बहुत आ रहे हैं. And I think that brings up to like you asked like how do you watch reviews? Sushir, what's Splattercat? Like I have a great resource which is the Game of Theme Press Start to Play podcast crew. WhatsApp group में बैठता हूँ मैं, ये लोग बताते हैं अच्छा गेम कौन सा है. And the thing is कि everyone knows हर एक का taste. Like everyone knows जय का taste, everyone knows उपहार का, मानस का, मेरा, सुशीर का, आयुष का. So it's like कि we will tell कि अरे तू ये गेम चेक कर because you might like it. Like अभी को we'll mention a horror game and be like अभी have you seen this horror game before? And Abhi probably knows about it because Abhi knows almost every horror game under the planet. So like वहाँ से like we get to know and like I get recommended and then उसके बाद I'm like, oh this looks interesting. Like उस दिन Sushi sent me like कौन सा था वो Cassette Beasts वाला game. Cassette Beasts, yeah. Which is like a Pokemon type fusion game where you can like fuse monsters and like fight. Right. So I was interested and then I went and I saw interesting लगा and then I went to YouTube and like looked for reviews and then I looked at multiple reviews like देख लिए मैंने बैठ के to see like okay what this game says. And then I was like okay ठीक है ये game I need to buy at some point and start playing. तो मैं तो कह रहा हूँ मैं तो #blessed हूँ. कोई भी रेट्रो कचड़ा वाला ग्राफिक्स का गेम आता है मैं चेक कर Now I realize all these tags that you do to group में जय का कुछ मैं देखते क्या समझ मुझे लगा होगा कुछ यार सुशीर ने टैग किया कुछ सही नहीं हुआ. Now that he's putting it like this. I want to say this on record. I am seriously angry at him for the number of hours that he can get to play games. My mind is blown that I get to sit in a factory or in an office daily and he's like playing games on his Switch and he purposely sends me updates regarding that and I'm like बहुत जलता है मेरा. I hope something bad happens regarding his Steam Deck or his like Steam account. कुछ ना कुछ हो जाए उसके साथ. I think that you should great, see like if you want to know how many games Jay is reviewing, you should go and follow his Twitter because वो ना हमेशा पोस्ट करता है कि उसने गेम खत्म करके रिव्यू कर दिया है. And then he will tag us also and tell us कि मैंने ये game 48th game, 49th game, 50th game. Yeah, this year. This year. He's IGN should almost hire him. completing two games a week. He has almost completed. On the basis of that, let me tell you, in 2022, there were like 10,963 games released on Steam. So that's like close to 11K games on the Gamifine, Gmail. We get requests to review games like almost like 10 a day. We can't handle that. We are all volunteers. We can't handle that much pressure. So that is why we get to pick and choose. Only Jay can. So that's why we get to pick and choose that. Okay, ठीक है ये game कर लेंगे and that all that. But also like जो IGN ने जो ट्वीट मुझे लगता है उसमें ना दे से 100 सच बोल दिया उन्होंने कि हाँ मतलब 7 out of 10 मतलब है क्योंकि तुम भी ऐसे हो सालो तुम जैसे हम भी ऐसे we are molded by you because we have to cater to you. तो दूसरा but I think another thing that they indirectly said is कि ना like जैसे IGN is not where you will come to discover games. Right. We will offer you games that you already want या फिर that you already knew about were looking for. But है ना बट हम तुम्हें लाइक नए गेम्स इंटरेस्टिंग गेम्स के बारे में जैसे समथिंग लाइक अ जेड जोन यू वोंट हियर इट फ्रॉम अस. राइट. हम तुम्हें इवॉल्व और एंथम के बारे में बता देंगे. आईजीएन फर्स्ट में आ जाएगा. रेडफॉल होगा आईजीएन फर्स्ट. डोंट वरी. हम उसको खेलेंगे भी ऐसे कि तुम्हारे आंसू निकल जाएंगे. तो बट लाइक यू वोंट लाइक है ना डिस्कवरी वाला प्लेस नहीं व्हिच इज आई थिंक दैट इज आल्सो लाइक अ लूजिंग पोजीशन से कहना के लिए लाइक
in the long run, these streamers who are like trying out PUBG and they blew it up, tried out Fortnite, they blew it up. Now they'll be the ones to tell you what the next big game is, not us. है ना, we'll be just वो जो बता देंगे बढ़िया गेम कौन सा है, तो हम बता देंगे कि ना टॉप 5 टिप्स हम बना देंगे उसके लिए, डोंट वरी, वो हम कर सकते हैं। IGN अरे फिल स्पेंसर खुद बोल दे रहा है वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ आउट कंसोलिंग सोनी निंटेंडो, तो IGN भी खुद ही बोल रहा है वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ आउट रिव्यूइंग other smaller channels. If you want to discover games, there are other channels. If you want to know about games that you already like are excited about, there is IGN, there is GameSpot, there's other stuff out there. वो है ना कि they have IGN, GameSpot, they all have brand name. So what it happens is कि okay, if my very super casual brother wants to play a game and he wants to look at a review, he will look at IGN. Yeah. If he's on social media and he's scrolling through Instagram or कुछ भी, he will see an IGN post over like a Splattercat ka post, because IGN will get more traffic. Like a new game is announced, like say City Skyline, he's into City Skyline, so the sequel ka some trailer is announced, IGN will have it on their socials and he will see it that way and know about it and check out IGN to see कि अच्छा ये लोग क्या बोल रहे हैं City Skyline 2 के बारे में। तो हम लोगों के लिए तो IGN is not very useful unless it's exclusive something, but बाकी जनता के लिए तो IGN बहुत काम आता है। Alright, एक tangent के बाद let's go back to the comments. आशीष वालिया का comment है इसमें, I wanted to mainly just say कि ना आशीष वालिया मुझे ऐसा लगता है is like the kind of person who has a lot of opposing views to mine, but वो बड़े अच्छे से put कर लेता है and it's not like a crazy person. ऐसा कि मतलब कि कुछ उठपटांगे बोल देगा, मतलब जैसे for example I think this comment was like very interesting. If you like dig in deep ना, इसमें ये Horizon Forbidden West वो burning shores पे ना वो 2 लड़कियां पप्पी कर देती है, people are very angry, what the fuck, ये मैंने क्या देख लिया। मैं तो ढूंढता था यार बचपन में कहीं दिखने को मिल जाए। मानस, that thumbnail got us stun 1000 views. 1000 views, मैं खुश भाई। मतलब अगर किसी को दिक्कत है तो क्लिक क्यों कर रहे हो? क्या हम लोग के पूरे वीडियो में इसके बारे में कुछ नहीं था, वो एक थंबनेल के लिए 1000 व्यूज मिले हम लोग को। मतलब आदमी लोग बोलते कि हम लोग को नहीं देखना, पर आदमी लोग को देखना वही है। हाँ, तो आशीष वालिया kind of takes the point up कि ना Horizon has one of the most satisfying combat gameplay, mechanically chef's kiss. I've not played the new DLC, but from the first 2 games and the first game's DLC, the series has never focused on Eloy's romantic options and all. So it's certainly an agenda if they do adding it, as the game hasn't been about romantic relationships ever. तो यहाँ मुझे लगा मतलब कि which is fair enough, but hey, where else would they explore? मतलब अच्छा वो नहीं मेन में करते तो भी चलता है, वुड माइंड में। इनफैक्ट आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर एक्चुअली मेन स्टोरी में होता है, इट वुड हैव फेल्ट मोर एम्बेडेड, एंड आई रियली विश कि इसकी पार्टनर हो दूसरी लड़की होती है यार जो मेन स्टोरी में थी। आई फॉरगेट द नेम, जो who is like Asian looking, who is part of the oh man, it's not her, I'm so disappointed। वो तो मुझे भी मैं कर लेता यार, एलोय को नहीं चाहिए तो एनीवेज, तो मुझे लग रहा है ठीक है, लाइक आई मीन इट्स ओके टू एक्सप्लोर, बट आशीष कह रहा है कि आशीष कह रहा है कि ना there's certainly an agenda, तो मुझे लगा मतलब ये कुछ वो एजेंडा की बात कर रहा है कि आशीष one of those crazies। तो फिर आगे वो कहता it's not about taking down big creatures and uncovering it's about taking down big creatures and uncovering the mystery. I'm not bothered by, to be honest, if she likes girls school। तो यहाँ अच्छा मुझे लगा अच्छा इसको ये तो प्रॉब्लम नहीं है कि लड़की ही genuinely thinks कि like ना like रोमांटिक ऑप्शन होता तो मतलब वो इट वाज नेवर अबाउट। मुझे लगा लाइक इन द सेकंड गेम इटसेल्फ लाइक दे काइंड ऑफ अच्छा हुआ कि एलोय पे ज्यादा फोकस नहीं किया। आई डोंट थिंक एलोय इज लाइक एन अमेजिंग लाइक ना ही जोल है ना ही एली, ऐसा कुछ तो नहीं है एलोय, इट्स नो शी इज नॉट दैट गुड और एनीथिंग कि उस पे, बट द वे दे काइंड ऑफ डिटैच फ्रॉम हर एंड लाइक फोकस ऑन द अदर कैरेक्टर्स बिकॉज़ शी हरसेल्फ इज अ लिटिल डिटैच। आई थिंक दैट काइंड ऑफ बिल्ड अप लाइक अ काइंड ऑफ कैरेक्टर जो थोड़ा कम से कम इंटरेस्ट क्रिएट कर ले बाय क्रिएटिंग डिस्टेंस। यू लाइक अच्छा क्या है वो चल क्या रहा है इसके साथ, तो थोड़ा मुझे लग रहा है इट्स नॉट कि इट्स लाइक ड्राइविंग मी, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग कि ये बर्निंग शोर्स का स्टोरी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट कुछ उतना कुछ फाड़ है, बट ठीक है अच्छा वो डीएलसी में, लेकिन आई कैन इग्नोर इट इफ आई वांट टू। मतलब अगर इफ इट्स नॉट गुड तो नॉट माय प्रॉब्लम रियली, मेन गेम में देखेंगे। बट ना लाइक आशीष वाले के मुझे आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग अप लाइक अ लॉट ऑफ पीपल ब्रिंग अप ना एजेंडा, ये वो कल्चर है क्या हो गया, मतलब आई मीन इतने सारे गेम्स में लाइक मेन एंड वुमेन वर किसिंग लाइक जैसे, तो was that an agenda like the straight agenda? If this is like the gay agenda या कुछ ना like they're trying to turn, तो मुझे लग रहा है आशीष वाले कितना थोड़ा नॉर्मल आदमी लगता है। I just hope go on. Without spoiling the DLC or the main game because मैंने दोनों खत्म नहीं करे हैं, is this Joel dice, is this girlfriend she's दोनों गेम में
Sorry, Is go. she a new character? Like, is she in हाँ यार, Ryzen पुराने वाले में? नहीं है, नहीं है. यार I फिर don't तो think वही so, होना मतलब. चाहिए था यार, द हाँ हंटिंग ग्राउंड्स वाली यार, मैं कह रहा हूँ ना, that बस is the तब से ही मेरे problem को पसंद actually. थी वो. हाँ, मतलब वो अगर क्रिटिसिज्म होता ना, I would like, यार dude, तुझे पता है, मतलब you actually like the game and you ना, कि this is like a valid criticism कि this should not, like, ये मुझे बिल्कुल मजा नहीं है यार. I hope कि मतलब this is like a fling or something. या ये like अभी like young teen, like She is टीनेजर से 20, निकली है, like 20, young है, 20s हाँ. में है ना, like थोड़े हॉर्नी, like needs to get it out. ठीक है, कोई भी उठा ले यार, हाँ, चलेगा. but But शादी टलाना से. yeah, oh yeah, go back to her, dude. She's awesome. What वो the moment like she showed up in Camp Forbidden West in one some mission she shows up, मैं तो सब छोड़ छाड़ के फोटो मोड खोल के दोनों को पोज करके फोटो खींच रहा था बैठ के. रोमांटिक फोटोज की भाई. Yeah. ओहो, क्या ये कुछ हो कर गया लो मेरा. पहले. मिशन जाए भाड़ में, मेरे They को were फोटो fun खींचनी together. थी. And वैसे like आशीष वाले का जो last like line हो गया था, I just hope they don't focus the entire game on that aspect completely. Focus it on adventures, secrets, and more new bigger machines. So मुझे लगता है like जैसे I mean if you played Forbidden West and जो Darren ने अभी बोला, like you were just excited to see that other person, Talana, like मतलब इसमें ना वो excitement नहीं है, but the things you're doing, it's the same kind of things. It's fun things. You exploring, you're adventuring, you're discovering the story. Like ऐसा नहीं कि like ना पूरे टाइम मतलब वो नखरे चल रहे वैसा. I think आशीष वाले के further replies में भी था ना, ऐसा कुछ भी नहीं. It's just fun happening and they like end up making out at the end. ना मजे कर रहे हैं, fun हो रहा है बस. इतना कुछ सीरियस नहीं है. डोंट वरी कर, मतलब चुम्मा चाटी कर रहे हैं यार. डोंट वरी. हाँ, इतना सीरियस, मतलब इट्स गुड साल फन. की उम्र में दुनिया बचा के तुम थोड़ा तो वही तो. इवन एलॉय भी, मतलब एलॉय कह रहा हूँ कौन है, एली भी ना लास्ट ऑफ अस लोग गुस्सा हो गए थे. इसमें क्या यार, बच्चे मजे कर रहे हैं, करने तो यार, तुम्हें क्या, तो अंकल जैसे बातें कर रहे हैं. मैं साला कॉलोनी में घूमता था सुन के, क्या तो अड़ोस पड़ोस के अंकल बोलते थे. इट साउंड्स लाइक दैट, लाइक डम, क्या कि तुम तो यार यंगर हो मेरे से, लाइक अ लॉट ऑफ यंगर पीपल आर सेइंग दिस ऑन द इंटरनेट. क्या बातें चल रही है. लेट दीस किड्स हैव फन. जलन हो रही है, जलन. हाँ, एग्जैक्टली. लग रहा है अभी का टाइम में बड़ा लोनलीनेस इज अ रियल प्रॉब्लम है. बट एनीवेज, वो हम अलग डिस्कशन करेंगे. कमेंट्स आर ओवर. इफ यू हैव एनी थॉट्स गाइस, कि ना इन शुड मोर गर्ल्स बी किसिंग अदर गर्ल्स इन वीडियो गेम्स? What about guys kissing guys? वो भी आई विल एंजॉय, बट सम गर्ल ऑन द एक्शन. Lay it out, please. On the next Konami game, a 90-minute episode. Let's wait for that. But yeah, this was a good one. We covered some good comments out here. Darren, any last? Yeah, Any कुछ last words बोल दे. There should be more. I agree with Manas. There should be more kissing in games in general. थोड़ा सा और, love is good. People should express their love. Be more vulnerable. करो भाई, थोड़ा और दिखाओ. I mean, comments में I would welcome, in fact, now, like, recommend more games. Not सीधा हनी पॉप में recommend करो. Damn it, मैं बोलने वाला था. मतलब थोड़ा ऐसे ना कि मेहनत करियो इस टाइप की ना, कि Horizon टाइप. हनी पॉप में मेहनत है यार. नहीं, of course I agree, मतलब. तो थोड़ा ना, tell me more games where I can get some nice. You have to go on 3 dates. नहीं, वो थर्ड डेट के एंड पे I want to like ना combat से third person action combat, then फिर some kissing. मुझे ये मैच 3 करके नहीं भाई. बट यार चलो, है तो ऐसे गेम्स बता दो हमें प्लीज गाइस. हाँ, कमेंट्स में डाल दो. वी वुड लव टू प्रमोट मोर ऑफ दोस गेम्स. चेक देम आउट. हैव अ गुड टाइम विद देम. यार, थैंक यू फॉर ऑल दीस कमेंट्स. बढ़िया, एज ऑलवेज अलग ही डिस्कशन हो जाता है विद ऑल दीस कमेंट्स. ऑलवेज गुड फन. एंड और कमेंट्स डाल दो नीचे. लाइक तो कर ही देना. सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो. यू आर वाचिंग और लिसनिंग टू प्रेस स्टार्ट टू प्ले विथ मी, सुशीर एंड डायरन, एंड आई एम मानस. मिलेंगे हम फिर. बाय बाय.